Hello and welcome to RiffScript presents All Fingers and Thumbs. Welcome to our latest episode. My name is Jainish and this is Pallav. Hi Pallav. हाय 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 हाउ आर यू। I am good. I'm good. बहुत दिन बहुत दिनों बाद हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आज। हाँ, बहुत दिन हो गए। हाँ वही। और टॉपिक भी ऐसा है ना कि मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में कि जब भी हम लाइफ में नेचर ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस, रियलिटी, इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं ना, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, दिस इज ट्रूथ। पर कभी कभी कैसा होता है कि इन सब चीजों के बारे में हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो किसी और का कुछ होगा, हमारा कुछ और होगा। सो फिलोसॉफी यही चीज है कि इट इज लाइक दैट, इट्स ट्रू टू लाइफ, बट वी डोंट नो इफ इट इज like it is good or it is bad, or what is right or what is wrong. True. ये सब चीजें जो है ना, ये सब हमें सुन के अच्छा लगता है, बट एज लाइफ प्रोसीड्स ये सब फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, यू नो। एंड कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि फिलोसॉफी इज काइंड ऑफ फॉल्स एंड दे डोंट बिलीव इट, इट्स अ लाई। कुछ लोग साइंस में ज्यादा मानते हैं और कुछ लोग रिलीजन में ज्यादा मानते हैं। तो ये सब चीजें आइदर कनेक्टेड है या फिर डिस्कनेक्टेड है, ये मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हम लोगों को कि ऐसे आदमी से जानना पड़ेगा जो इसके बारे में पढ़ता है, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ इसके बारे में। तो जो पढ़ता होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, अगर उसको पता होगा, then it would be better to discuss with him and also learn something from that. So आज के हमारे गेस्ट कौन होंगे इसके बारे में? गेस्ट तो हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट जो आपने बोला ना उसमें ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि फिलोसॉफी is something that can be taught or that can be studied only by a few people, कि जिनको इंटरेस्ट हो फिलोसॉफी करने के लिए अलग दिमाग होना चाहिए या फिर अलग सोच होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इफ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग and if you are dealing with struggles, if you are dealing with various aspects of life, right, हम सबको existential crisis होते हैं, हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाते। हम सबको फेथ के लिए क्वेश्चन होता है, हम सबको ऐसा होता है कि why we are existing in this world। हाँ, हमें गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में भी क्वेश्चन रहता है। फिर हम मॉरालिटी या बहुत सारी चीजें जो हम डेली रूटीन में जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो सभी चीजों के कोर में, सभी चीजों के एसेंस में फिलोसॉफी बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफी हमें कहीं सीखने जाने की जरूरत हो या फिर उसके लिए कोई अलग सोच रखनी चाहिए। as long as we are introspecting, as long as we are observing, and as long as we are curious about life and we are questioning things, then we are studying philosophy, right? That's what I believe. Yeah, correct correct, एकदम सही बात है ये। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि आई थिंक जो लाइफ है वो क्या है, वो फिलोसॉफी सिर्फ डिफाइन करता है। आई थिंक जो ह्यूमन बीइंग एक लाइफ जी रहा है, वो फिलोसॉफी मतलब उसके बारे में सिखाता है हमें। सिखा नहीं रहा, मतलब उसके बारे में कहता है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ। राइट रॉन्ग ये सब अलग है, बट दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जो डे टू डे ऑब्जर्वेशंस में से जितने भी फिलोसोफर्स हो चुके आज तक, सभी लोग ऐसा होता है ना कि डे टू डे ऑब्जर्वेशंस और कैसे हम लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उन सब को अगर किसी सब्जेक्ट से या किसी चीज से हमें उसका क्रक्स बनाना हो, हमें उसका एसेंस बनाना हो, तो उसके लिए फिलोसॉफी हो सकती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट है स्तवन पंचोली, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर and he is very much into philosophy. He reads a lot, he thinks a lot, and he has a lot to say about morality and various aspects of philosophy, faith, and how human beings deal with various aspects of life. So let's welcome him and let's get to know more about this, right? Sure. Yeah. Welcome Stavan to our podcast. Thank you for joining us today. Thank you for this opportunity. तो एक्चुअली हमने पहले भी बात की है, और जब भी मैं शिवांग से बात करता हूँ तो बहुत बार बातें सुनी है। तो मेरा सबसे पहले मुझे बहुत दिनों से ये पूछना था
how did you develop this interest in philosophy, because you are a student of literature and you don't have to study this thoroughly, right? You don't have to study this religiously, but still you are quite intrigued by philosophy and you are intrigued by a lot of things. So how did you got this interest in philosophy? See, actually, philosophy is not, separate from literature or anything that we, if in the whole sphere of life we see, it's not separate from anything. So on a personal level, well, I was a science student till 12th, and after that it was a very tough choice to change it to literature. And जब मैंने सोचा कि I have to pursue literature, I was almost clueless to attempt to reconcile what I want to study and what I don't want to study. So but over the course of time, and I would especially mention Shivang and even Yash and a couple of my professors too, who kept me engaged in this, and I got to know some books and some excerpts. I like मैंने ना थोड़े quotes पढ़े, मैंने थोड़े pages देखे, and I read some books, and then it got me interested, and through the course of time it helped me to gain more and more perspective. So yeah, here I am. इंटरेस्टिंग. मतलब हमारे साथ जनरली ऐसा होता है कि ऐसा कोई पाथ स्टार्ट कर लेते हैं जहां जिसका कोई आइडिया ना हो, लेकिन फिर वी फिगर थिंग्स आउट, राइट? yes, exactly. ट्रू ट्रू. करेक्ट. तो आप मतलब एक्चुअली हम लोग बात अभी बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारे हम लोगों ने वही बात कर रहे थे कि फिलोसॉफी के बारे में ही बात कर रहे थे एक्चुअली में, कि जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे कि फिलोसॉफी एक्चुअली में लाइफ और फिलोसॉफी में डिफरेंस नहीं है, जैसे आपने भी वही बोला, राइट? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड फिलोसॉफी. Yeah, so that's what, but people think that sometimes people think that it's a lie, or they don't believe in philosophy or something like that. I've heard it from many people, right? और पर मैं काफी फिलोसोफर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, जैसे हमारे इंडिया में ही है शंकराचार्य, अगर आपको पता होगा. तो he was a philosopher, and उनका एक आइडिया था कि his aim was mostly, जहाँ तक मैंने समझा है, कि मोक्ष और फ्रीडम और सम वो उनके आइडियाज थे, राइट? सो yes, the Vedic philosophy. या तो करेक्ट. तो वही बोलना चाहता हूँ कि एज यहाँ पे जब हम लोग रह रहे हैं एज लिविंग बीइंग्स, हमारा फ्री विल जो है वो जहाँ तक है वो मतलब एक कहते हैं बंद है यार. वी फ्री, बट वी आर नॉट एक्चुअली फ्री, बाइंड बाय मेनी थिंग्स, इवन ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, राइट? सो ये जो काफी फिलोसोफर्स बोलते हैं कि they go for free will or freedom, they have quotes on that. So does free will exist? Well, like this question is a question of not only centuries, it's a question of millenniums. Like agar hum dekhe na, to this debate mostly we are taught the Western one, but if we see Indian one, then we can say it's a debate since millennia. It has almost continued, and still people don't agree on that कि या तो free will है, या तो everything is determined, और या फिर सब कुछ लिखा हुआ है, और is there something else. There are people who are compatibilists जो बोलते हैं कि हाँ थोड़ी चीजों में हम free है और थोड़ी चीजों में things are determined by external factors, that they are compatibilists. So ये सब चीजें हैं, but on a personal level, see, this is all subjective, right? ये खुद के beliefs और वो सब होता है. But what I would say is free will का पहले conception था नहीं, because it's all historical. कि आप कौन से era में होते हो वो depend करता है, and what narrative is powerful. ये actually मिशेल फूको करके एक philosopher थे, उनका concept था एपिस्टेमे का. एपिस्टेमे in very brief अगर मैं समझाऊं, that is that एक sphere of life, एक particular era, जो ऐसा नहीं, it's not like 1900 से 2000s, right? It's not like that, but it's like a particular era or generation which is not marked by time or borders of
कल्चर, बट जहाँ पे एक टाइप का नैरेटिव डोमिनेट करता है जो लोगों की थिंकिंग को शेप करता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल पहले लोग, नो, देयर वाज अ वेरी हार्ड फेथ इन फेट कि भाई सब लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वही होगा, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? एंड मेनी पीपल बिलीव इट राइट नाउ, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अभी लोग बोल देते हैं, राइट, कि हाँ भाई जो लिखा, अगर लाइक यू नो इफ फॉर एग्जांपल योर फेवरेट टीम लूजेस, देन पीपल आर लाइक हाँ भाई जो लिखा हुआ होगा, आगे देखते हैं। और इफ यू डू समथिंग like great, maybe you win a medal, or you get good marks, or you get a great job or something, right? Then you have sort of a victory, and then you don't like to believe कि हाँ भाई this was coincidence, right? ये मेरी मेहनत थी. So like there is a quote by Friedrich Nietzsche, a philosopher. उन्होंने बोला था कि no person who has won will believe in chance. So yeah, but I would say that it's very complicated. Like बहुत सारे लोग थे, थॉमस हॉब्स करके एक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला था कि उनकी एक लेविएथन करके बुक है, in that he has mentioned that yeah, people are free, there are external factors that determine things, but people are free on the level where they can operate. For example, अगर आपको कुछ करना है, right? For example, you want to drink water right now, then you get a glass of water or a bottle of water and you drink. So you'll be like, yes, I was a free agent, मैंने ये खुद किया, right? So I have free will. It's not like मेरे को force किया किसी ने पानी पीने या ना पीने के लिए. And so he was a compatibilist. वो पूरी तरह से free will में नहीं मानते थे, but वो ऐसा भी नहीं बोलते थे कि सारी चीजें external factors determine करती है, right? So you now unless अगर for example मैं वहां हूँ आपके साथ और आप दोनों को पानी पीना है और मैं रोक लूं कि नहीं ये पानी पियोगे, तो अगर ऐसा कोई लॉ हो गवर्नमेंट का कि हाँ भाई 9 से 10 के बीच में पानी नहीं पीने का, देन इट वुड बी कि हाँ ये नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग यू, बट इन जनरल यू कैन ड्रिंक वाटर. सो यू विल थिंक दैट in some cases I am free, in some cases I am not, right? But a critique of that would be, एक philosopher थे आर्थर Schopenhauer, whatever the pronunciation is, it's debated. Schopenhauer. Yeah, Schopenhauer. So he said that you are free to do what you want, but you are not free to wish what you want. Right? It's like if you want to do something, right, you can do it, but what made you do it? For example, मेरे को पानी पीना है, क्यों? It's my body demanding it. Now why is my body demanding it? So पहले भी पीछे कुछ हो चुका होगा कि हाँ भाई 1 घंटे से पानी नहीं पिया, right? And moreover, we cannot say that everything is determined, right? We cannot say कि भाई लाइफ में चांस या कोइंसिडेंस ऐसा कुछ होता ही नहीं है. If we say that, then that's pretty, going out of the line, because one more philosopher, see, I'm name dropping a lot, but there's a philosopher, Gilles Deleuze. He was a postmodernist. उन्होंने बोला था कि it's like a rhizome. ये बायोलॉजी में कंसेप्ट आता है कि there are roots and everything is like a map. अब मैं आपको अगर इंडिया का मैप दे दूं, बराबर, एंड मैं आपको बोलूं कि आपको जयपुर जाना है, राइट? देन you will not be like कि मैं गुजरात से होकर जयपुर जाऊंगा. इट्स नॉट लाइक इन रियलिटी. मैं सिर्फ आपको मैप देता हूँ, मैप का पिक्चर, we'll just point Jaipur out, right? And it's connected to millions of places in the map, right? So he said that history and in general everything in the sphere of life is like that, कि it's connected, everything is connected, and चीजें डिफरेंट से पैदा होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी यही चीज में फोटो लेता हूँ, लाइक यही पोजीशन में, एंड आई टेक अनदर पिक्चर राइट आफ्टर इट, राइट? सो यू विल बी लाइक हाँ ये तो दोनों सेम पिक्चर है, राइट? और इफ आई गिव यू द बुक लाइक नीचेस बियॉन्ड गुड एंड इविल, मैं तुम दोनों को एक एक कॉपी देता हूँ, राइट?
And you'll be like, these are the same books, same content, same writer, same author, same publication, right? But he was like that you repeat these things because for humanity's easiness, हम क्या बोलते हैं, चीजों को कैटेगराइज करते हैं कि हाँ भाई ये रिलीजन हिंदू है, रिलीजन मुस्लिम है, this guy is an Indian, this guy is non-Indian, right? There are so many categories. This is a man, woman, this person is from LGBTQIA, right? These are categories. But in that what we do is कि हम चीजों को we stop them. Right? For example, if I tell you that by तुम engineer हो, then that does not mean कि तुम पूरा दिन सॉफ्टवेयर से काम करते हो, तुम खाते पीते नहीं हो गया. You also watch movies, you might read books, you might do something else. Your identity is not an engineer, right? So you cannot essentialize people कि भाई ये इंसान यही है, right? So that applies to everything. So he said that there are multiplicities, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, and everything has potential. For example, अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद अगर आज मैं बीमार होता तो ये ना हो पाता, right? So that is also a potential. And इसको उसने बोला virtual world where there are lots of potentials. Like if you go on a scientific basis, like people would be more introduced to that concept with that कि हाँ भाई multiverse होता है और दूसरे यूनिवर्स में मैं कुछ और कर रहा हूँगा. So this is like such kind of a thought experiment, but this is not scientific. It's metaphysical कि भाई एक virtual है जहाँ पे बहुत सारी possibilities है, and we are doing one of the possibilities. अगर कुछ और किया होता तो something else would have happened. And free will में, so we can say that everything is not determined. बहुत सारे chances थे, but ये एक chance हुआ है. That does not mean कि यही होने वाला था, right? 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती, so that does not mean कि वो इंडिया के लिए लिखा गया था. Things happened, people performed, सामने वाले से गलतियां हुई, हमने बहुत अच्छा खेला. That's why we won it, right? So यहाँ पे एक बहुत मस्त डिफरेंस आता है कि what do you define free will as? So यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है एजेंसी का. एजेंसी एज इन कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक कंपनी के लिए एजेंट हो. दैट डज नॉट मीन कि यू आर द कंपनी, राइट? यू आर डूइंग समथिंग फॉर द कंपनी. सो यू माइट डू एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल जब जो लोग हार्ड डिटर्मिनिस्ट होते हैं कि सब चीजें एक्सटर्नल फैक्टर से होती है, तो लोग क्राइम से बच जाएंगे ना कि भाई ये तो मेरी वजह से, मैंने मर्डर नहीं किया है, ये तो बस एक्सटर्नल फैक्टर से हो गया, राइट? एंड अगर फ्री विल हो और मेरे से गलती से किसी को मेरे से धक्का लग जाए और सब बोले कि भाई नहीं तूने तो पर्पसफुली किया क्योंकि ह्यूमंस तो फ्री होते हैं, तेरे पास चांस था कि तू रोक सकता था. सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी, दैट ह्यूमंस डू थिंग्स वेदर इट इज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं, उसका इंटेंशन देखना होता है, और उसका अनकॉन्शियस क्या बोलते हैं इमर्जेंस देखना होता है कि ये भाई क्यों हुआ एंड इससे आगे क्या होगा, राइट? सो ह्यूमंस कैन बी एजेंट. वी माइट नॉट बी फ्री, बट वी कैन बी एजेंट, राइट? Yeah. Quite fascinating. That's my personal nice perception. I actually when you talked about drinking water, my brain came out with this thought that you need to drink water, and I immediately started drinking water. So this thought came to my mind that whether I'm doing this out of free will or whether it is because of you, right? So yeah, it's quite a conundrum. He said something happened in behind. That's why your mind said that you drink water. Yes. Yeah, exactly. Because this happens a lot of times, right? Whenever you are talking about water or something, and immediately some person would start feeling thirsty, right? It happens to a lot of people. And you've drawn a great analogy that every single action or every single consequence should have to be looked at through the lens of intentions and
whether that person was doing it out of their own will, or it was due to some external factors, right? That was quite Yes. fascinating. Yeah, correct. But I Nice. always feel that I genuinely I'm a person who feels that it's neither of those things. I mean, we are not, people in general are not into those any of these extremes. It's not only about free will or determinism, it's about everything that is life. Humans can never be on any of the extremes that are there. We are always Yes. finding the middle ground, finding the balance, because we are not robots, first of all, and things and situations happen because of various factors. If you said that we are doing this podcast not only because of a single person, right? There are a lot of Yes. factors. We are doing this at this point of time because I had a lot of things to do, you had a lot of things to do, Yes. Pallav had a lot of things to do. So not only the event, but the timing of the event also gets determined based on various factors. So how do you pinpoint one particular aspect by which you can define that, yeah, this is the thing due to which this action or this consequence happened, right? So yeah, free will, I genuinely believe that people are not truly free. Yes, we are not truly free, right? And ये जो conception है ना free will का, in the West we can trace it down to the rise and rebirth of Christianity. क्योंकि because उसमें जो एकदम पहले वाले जो संत थे, the saints, they said that doing sin is in our hands, but we will face whatever God has decided for us, right? So it's like humans are free. That's why there is a concept of heaven and hell, but our fate will be decided by God. That is, the final hour or the day of judgment in Christianity. So uske baad, modern liberal democracies आई, after 1500s and 1600s, when the West dominated the world majorly, right? And it also has to do with the rise of capitalism, जहाँ पे individualism को बहुत आगे रचा गया कि पहले तुम लोग अगर, for example, if you were born before the rise of bourgeois capitalism or industrial revolution, तो क्या होता कि you would work for a communal goal, a shared goal, because there was nothing outside the community that you were doing work for. For example, there were 15 to 16 people who owned the land, और वहां पे वो लोग काम करते थे, फार्मिंग करे या फिर कुछ चीजें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी उस टाइम की, राइट? सो वो सब होता था, एंड इट वाज फॉर अ बिगर ग्रुप. फॉर एग्जांपल, you might do something and Pallav might do something and I might do something, and all of us are doing it for this particular group which everybody is associated with. But by the rise of capitalism क्या हुआ कि everybody became a particular individual agent जो खुद के own self interest के लिए काम करता था, and self interest was the major factor. And उसमें उन्होंने logic क्या दिया, which might be morally wrong to some and morally right to some, right? It's a long debate, but उन्होंने logic क्या दिया कि अगर तुम खुद के लिए काम करोगे तो दुनिया आगे बढ़ने ही वाली है, right? But इसमें प्रॉब्लम क्या है कि the rich and the powerful, the ruling class, वो अपने इंटरेस्ट को ऐसे दिखाते हैं कि दुनिया का इंटरेस्ट है. एक अमीर आदमी क्या बोलेगा कि मैं ये चीज मार्केट में ला रहा हूं, राइट? इससे सबका भला होने वाला है, प्रॉफिट भले वो लेगा, बट ही शोज इट समथिंग एज मोरल. वो कनेक्ट करता है उस चीज को विद समथिंग मोरल, एंड एवरीबडी इज रॉब्ड ऑफ कि भाई मेरे को तो जीना पड़ेगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पावर स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू अ जॉब. तुम्हें इंजीनियरिंग के बाद भाई मेरे को घूमने जाना हो तो, मैंने आज आर्ट्स खत्म कर लिया, मेरे को कुछ और करना हो तो, एवरीथिंग इज रन बाय कैपिटल. मैं और तुम, हम सब कमोडिटीज है, राइट? वी आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग समथिंग, so we are not individuals. Or
एंड इसमें आया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी मोस्टली बाय जॉन जैक रूसो कि भाई इसमें अगर एक दूसरे पे हावी हो जाए हम, कि भाई कंपटीशन की वजह से हम एक दूसरे को नॉट एज समवन हु आर वर्किंग टुगेदर, पहले कम्युनिटी में होता था ना कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कम्युनिटीज एग्जिस्ट आज भी, बट एवरीथिंग इज अंडर अ बिग थिंग, अ बिग मेटा नैरेटिव ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? अगर फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस कम्युनिटी है तो वो जरूर एक दूसरे के लिए काम करेंगे, फेस्टिवल्स मनाएंगे, अभी जैसे कि दशहरा है, लोग फेस्टिवल्स मनाएंगे साथ में, बट पैसा कहाँ से आएगा दशहरा का, राइट? तो फॉर दैट वी हैव टू वर्क, एंड दैट्स इंडिविजुअली, राइट? एंड सो पीपल आर स्लेव्स आज भी, जस्ट दैट हमको बताते नहीं है, वी आर नॉट अंडर ट्रेडिशनल अथॉरिटी की हमको चाबुक मार के कराते हैं, हमको बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये मिलेगा, ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये काम करो, आगे जाके मजे ही मजे हैं, यू नो उस तरह के वी आर साइकोलॉजिकल स्लेव्स. इंटरेस्टिंग. सो राइट, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि उसके बाद काम है ना लोग इंडिविजुअली करते थे. तो अगर मेरे को तुमसे बचना है कि भाई व्हाट इफ आई कैन नॉट डू अ थिंग एंड you want to do a thing, then or you can do a thing and you are privileged कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, मैं अगर तुमको क्या बोलते हैं एंड इफ यू आर प्रिविलेज, तो तुम मेरे पे हावी ना हो जाओ कि भाई मेरे पास तो है, ये नहीं कर सकता, इसको दबा देता हूँ, राइट? तो उसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भाई देयर इज समथिंग कि भाई कोई एक दूसरे की राइट्स को छुएगा नहीं, राइट? बट ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है if you go to a deeper history, but that's a topic of other day. Yeah, definitely. But yeah. what you said is right. Free will वहां से आया. हाँ, I feel that जैसे आपने कैपिटलिज्म का एग्जांपल दिया, तो मुझे लगता है कि कैपिटलिज्म से इंडिविजुअलिज्म क्रिएट हुआ, इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म की वजह से बाय प्रोडक्ट में आया मार्केटिंग, और मार्केटिंग से आया इल्यूजन ऑफ फ्री विल, कि हम जैसे अभी मान लो कि मैंने कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट देखी और उसमें मैंने देखा कि ऑफर चल रही है या फिर डिस्काउंट है या कुछ भी, तो इवन दो, और उसमें एक और फैक्टर होता है ना कि एक या दो ही चीज सेम, अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो उसका स्टॉक एक या दो ही चीज जितनी बची है, बाकी नहीं बचा है, तो वैसा वो दिखाते हैं ताकि हमें लगे हमें शायद तुरंत उस चीज की जरूरत ना भी हो, लेकिन हमें दिखाया ऐसे गया है, हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया गया है, तो हम बाय डिफॉल्ट हमें ऐसा लगता है कि अभी नहीं परचेस करेंगे तो चला जाएगा, वो वापस कभी नहीं. हाँ, एग्जैक्टली. तो हमें लगता है कि हमने खुद से खरीदा क्योंकि हमें चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें किसी ने करवाया और हमने किया. Yes, this is commodity fetishism. कि भाई एक लोगों की एक दुविधा क्या होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बुक्स, कि भाई ये बुक तो कितनी अच्छी है, इसको मैंने पढ़ा हो और ये मेरे पास हो, राइट? फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर ये बुक है, राइट, मैंने ये कहीं मार्केट में देखी और मैंने रख दी घर लाके, बराबर, ये और ऐसी 2-3 बुक्स, उसके बाद आई डोंट रीड इट, राइट, क्योंकि ये मेरे पास है. अब इट्स लाइक मैंने अपनी एक इनसिक्योरिटी को दूर किया जस्ट बाय पोजेसिंग इट. मैं पढ़ू ना पढ़ू क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम है ही है, एज इफ मेरे पास तो मेरे को पता ही है कि मैं कब मरने वाला हूँ, मेरे साथ जैसे कि मेरे को बहुत टाइम मिलने वाला है, राइट? आई एक्ट एज इफ. उसके बाद मैं ये दूसरी बुक देखता हूँ, यार ये बुक चली गई तो मेरे पास से कि मेरे को इसका पढ़ने का चांस नहीं मिला था. एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि लाइब्रेरीज का बहुत वैल्यू कम हो रहा है. ये लाइब्रेरी में बुक रिटर्न करनी पड़ेगी, ये तो अपनी है, ये कहाँ से? ये मोरओवर या हाँ सॉरी नहीं बोलिए. हाँ, like moreover things are in a way कि it's like मार्क फिशर ने एक टर्म दिया था, कैपिटलिस्ट रियलिज्म, जहाँ पे we cannot think outside of whatever has been established. कि लोग बोलेंगे कि हाँ पर जॉब तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो क्या करेगा, एज इफ जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुआ है तब से लोग वर्क ही कर रहे हैं फॉर मनी, ऐसा तो है नहीं. ये हुआ इवोल्यूशन से है, जैसे सोसाइटीज डेवलप हुई, वेस्ट का डोमिनेंस बढ़ा, न्यू लिबरल इकोनॉमी डेवलप हुई, राइट? इट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस. बट कैपिटलिस्ट रियलिज्म जो हमारी एज में हुआ है,
इट्स अ फिनोमिना जहां पे यू कैन नॉट थिंक आउटसाइड ऑफ दिस, कि भाई इसके अलावा क्या रियलिटी हो सकती है। हाउ कैन अ पर्सन थिंक कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ये वो। एंड इवन पीपल, वो लोग नहीं होते कि हाँ पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये वो, बट दे आर ऑल्सो अंडर दैट थिंग, बिकॉज कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, इट मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू प्रिविलेज्ड एंड सर्वाइव विदाउट हार्मिंग जो एस्टेब्लिशमेंट है, विदाउट टेकिंग द हार्डर स्टेप्स, यू आर डूइंग व्हाट यू वांट। लाइक आज स्पिरिचुअलिटी है, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स जस्ट अ फसाड कि भाई ये कर लो वो कर लो, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या, more like a it's rule book rather हाँ than हाँ yes concept, yeah. हम्म, तो जैसे आपने वो बोला ना कि एवरी इंडिविजुअल जो है अभी ऐसे इंडिविजुअल एजेंट की तरह काम करता है कि किसी के लिए काम करना। तो मुझे लगता है कि हम मतलब जो फेथ के बारे में सोचते हैं कि हम, जैसे आपने बोला ना कि ये होता है कि हम ऐसा लगता है कि कुछ कोई कर रहा है और हम हमसे करवा रहा है, कोई जो है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर में जो हमें नहीं पता, जो बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है, वैसी कोई चीज या वैसा कोई है जो हमसे कुछ करवा रहा है और हम कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हाँ, होता but है ना, I did not say that was another person or another no no like no someone no no like no God. that's what Yeah, no that's what people perceive, right? That's what I'm saying कि हम ऐसे yeah, जनरल, people were yes. हाँ जनरल परसेप्शन ये है ना कि हमें हमसे कोई करवा रहा है या ऊपर वाला है जो सब कुछ देख लेगा, वो हमारा सब कुछ संभाल लेगा। उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि भाई अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, बुरों के साथ बुरा ही। हाँ, तो ये कंसेप्ट ऑफ फेथ जो है वो कहाँ से आता है, मतलब उससे मतलब हम गॉड को क्यों मतलब हम खुद को भी अभी तक नहीं मतलब इंसान खुद को भी अभी तक पूरा समझ नहीं पाया। हम खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं इतने सालों से। बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अलग अलग थियरीज पर भी काम किया, लेकिन फिर भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पर्पस अभी तक हम नहीं समझ पाए, राइट? तो फिर हम किस तरह yes. से इतने श्योर हो सकते हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड? हाउ आर वी सो फेथफुल? Right. See, अब ये तो it's like one of the biggest questions ever, right? साइंस ने आंसर किया, रिलीजन ने ट्राई किया आंसर करने का, इवन philosophers have tried answering it, right? So it's like स्पिनोजा था ना, there was a बारक स्पिनोजा, उन्होंने क्या बोला था, एवरीथिंग दैट इज इमनेंट, इट्स नॉट दैट कि गॉड हमसे ऊपर है, एवरीथिंग दैट इज इमनेंट, जो भी है यहाँ पे और जो चेंज होता रहता है, जो चीजें बदलती रहती है, जो भी होता है, एवरीथिंग दैट ऑकर्स ऑन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस यूनिवर्स, वही गॉड है, राइट? देन इन ऑन द लॉजिकल लेवल, गॉडेल्स ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, गॉडेल करके फिलोसोफर, उन्होंने वो he did it by using analytical philosophy. Then there are atheist philosophers who deny God, right? There are scientific people, there are even scientists who believe in God, and this is a very ये एक बहुत स्कैरी और वियर्ड चीज है जो प्रोपोगेट की जाती है कि भाई साइंस और रिलीजन हमेशा आमने सामने होते हैं, दोनों कल्चरल है। साइंस ऐसा कुछ नहीं है जो कल्चर से दूर होगा, एंड रिलीजन भी ऐसा कुछ नहीं है जो कल्चर से दूर है, राइट? Religion is also part of culture, science is also part of culture. It's not as if कि scientific discoveries language के बिना, या फिर एक इंसान के पास कितना पैसा है, कैसी कंडीशंस है, उसके साथ वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं, वो सारी चीजें डिटरमाइन करती है, राइट? उसका एस्टेब्लिशमेंट, थिंग्स, हाउ थिंग्स आर, स्टेटस को, एवरीथिंग डिटरमाइंस दैट अ साइंटिफिक डिस्कवरी और एन इन्वेंशन और अ थियरी उसको जो है वो बनाने में, राइट? तो सो या वो डाइकोटोमी नहीं है कि साइंस और रिलीजन आमने सामने। देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स हु बिलीव इन गॉड, देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स हु डोंट, बट टू थिंक समथिंग इज ट्रांसेंडेंट टू अस कि भाई गॉड है, दैट कैन बी कंफर्टिंग कि हाँ भाई चलो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो हुआ, बट दैट कैन बी वेरी स्कैरी टू। जैसे कि लोग, कोई गरीब होता है
या फिर कोई हैंडीकैप्ड होता है तो क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो उसका भगवान ने उसका नसीब दिया, एज इफ ही इज हेल्पलेस, उसका जन्म ही इसके लिए हुआ है ऐसे परेशान होने के लिए, ऐसा तो है नहीं, राइट? इट्स बिकॉज ऑफ हमारा प्रिविलेज कि हमको भाई हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि हम आगे बढ़ पाए, उसको नहीं मिला, राइट? दैट पर्सन डिड नॉट गेट इट, सो दे कुड नॉट डेवलप एज वी हैव. सो वी कैन नॉट से कि हाँ भाई ये तो भगवान की देन होगी, यू कैन नॉट से. एंड दूसरी तरफ ऐसा कुछ बोल दे कि भाई अब भगवान जो करेगा वो ठीक, बट वहां पे हम मार खा जाते हैं कि भाई if I want to do something and if I can't do something and if I'm stuck somewhere and we say that whatever God wills will happen, that's problematic because in a sense we are letting the control go, we are letting our agency go from there, even if we could have done something. And so there are many atheistic concepts of God ki ek to there are religious concepts जो theological होते हैं and religious होते हैं कि बहुत सारे Hinduism has one theory, the tribals have different theories, Muslims, Christians, Jews, Buddhists, Jains, everybody has their own theory, right? What God is, and then spiritual people have their own thing, own conception ki God is within us and all of that, or God is energy, right? So God hai nahi, it's a very very different a different dimension of inquiry. But if we see pehle ke zamane mein there was not as much as thinking or as much as the availability of critical analysis जो आज हुआ है. तो पहले लोगों को चाहिए था कि they need to survive, they need meaning in their life, what binds each other together. तो उन्होंने ये concept बनाया है कि there might be God, right? And nobody knows कि God का concept आया कहाँ से कि ये भाई सबसे पहले ये शब्द किसने यूज किया, कौन से इंसान ने, कौन से कल्चर में. We are not so sure of that, right? There are claims, but कि इजिप्ट में हुआ या फिर इंडिया में हुआ, ग्रीस में हुआ, but people are not sure. So पहले ऐसा था कि it bound some each other together, right? Community and stuff. आज के जमाने में अलग है, it's an individual choice, right? तो यहाँ पे the very definition of God changes. There are theological concepts like God is impassible, he cannot change, right? But everything in the world changes. Then how can a God not change? And then there comes the concept of transcendence. Transcendence means aloof from everything. कि भाई भगवान है, वो इन सब चीजों से परे है. People speak. But there is this very interesting video on YouTube, God's God, right? See, so उसमें एक चीज बोलते हैं कि if God is almighty, if God is all encompassing की हर जगह है या फिर हर चीज में समाते है और God controls everything कि उनके बिना यूनिवर्स चलेगा नहीं, then who made God, right? So the God says कि well, I am the creator, without me nothing can be there, and I have been there since the beginning of time, right? I have been there even before the concept of time was there, and even after the concept of time will perish, ऐसा बोलते हैं. But then there is a paradox कि if there is such a thing, then how can humans know about that? Yeah, correct. Right. And people say कि हाँ भाई वो तो फिर spiritual enlightenment हो गया तुम्हारा, तो ही हो सकता है, ये बाबा साधु के कहीं बाबा साधु को हो गया, and they will talk about things that might sound supernatural, right? But there are many logical fallacies कि भाई you are citing a particular case, a particular scenario. For example, एक particular ball पे मैं 6 मार दूं, that does not mean कि वही particular ball के मैं हर बार छक्का मारूंगा, right?
That cannot happen. Hmm. It's humanly impossible. Right? So it's like अगर किसी को ऐसा experience हुआ, and how can they claim that their God can be my God? Right? उसकी shared value होनी चाहिए कि भाई तुम जिस चीज को God define करते हो वो अगर साइंस से कुछ explain हो गया तो कि भाई ये God नहीं है, ये तूने ड्रग्स किया हुआ है, या तो you are seeing something, right? Or on the other hand, what I want to say is that, see, if you see, then there are very many logical paradoxes, right? कि भाई गॉड हर चीज से ट्रांसेंडेंट है, अगर भगवान इंसानों की लीग में ही नहीं आते हैं तो फिर इंसान के पास ऐसी लैंग्वेज कहाँ से आई, ऐसी चीजें कहाँ से आई जिससे वी कैन एक्सेस दैट. On the other hand, people say that God is everything within us, and that's a very it's a fairly acceptable concept कि भाई हर जगह है, नेचर में है, यहाँ पे मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, everywhere God is. But then that's not big of a concern. Then why to define it as God, right? What is its function कि भाई अगर मेरे में भी है, तुम्हारे में हर जगह है, then why to, well, उसका मीनिंग क्या है उस चीज को, इस कंसेप्ट के एग्जिस्टेंस का, राइट? Yeah. So about God, it is said that most of the philosophers, everyone, I think Socrates only said that I know I'm intelligent because I know nothing, right? That is something that I like very much. And कि कभी भी कोई भी God के बारे में पूछता है किसी को, for example, there is another spiritual master whom I follow, and he said that I don't know is something that why can't we address it about God, right? But like atheist is also believer, like some philosophers are atheists, they are also believer, they are also believing something, and believers are also believing in something, that is God, right? Someone is believing that there is no God, but someone who is intelligent would say that I don't know. That's it. That's simple. Someone asks, does God exist? I don't know. That's it. That's how Socrates wanted to convey that if someone asks you, you are a seeker in life. So that's why you just say, I don't know. That's how you show your intelligence, right? Rather than you show what you're knowing, right? So then there are some philosophers who are just opposite of it, that there is no God. Everything is what you said is from us, what life is. It is dead. There is no concept of heaven or hell or anything. There's no concept of moksha or anything. So why is it like that? That science, like religion and philosophy, they are related to each other, but still philosophers are against religion or God. Well, that depends on which philosophers you are talking about and which generation of philosophers you are talking about. Like, there are many Christian philosophers, there are many Hindu philosophers, Muslim philosophers who would identify as such, right? जैसे एक हिंदू या फिर एक मुस्लिम या फिर एक a Christian philosopher might be a Christian, Hindu or Muslim because they believe in that particular conception or perspective of God. Then there were atheist philosophers like Nietzsche, Friedrich Nietzsche. He was an atheist, and like he would openly talk about that. Arthur Schopenhauer, he did not believe, he was a nihilist, pessimist mostly, right? Negation of God, and he also did not believe in God, right? But then there are many people who, as you mentioned, ki जो बोलते हैं कि there are no chances that I would know whether there exists a God or not. They are agnostics. कि they are not concerned कि भाई मेरे को पता है नहीं पता है, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, right? So the thing is that first of all there needs to be a shared language of what you define as God. If you define God as immanent, as ever existing, everything, then people would say कि हाँ भाई ऐसा होगा. But then there are conceptions कि भाई it's like an energy, there are vibrations and stuff and all that. Then there are people who would talk about logical positivism. एक ऐसा movement था जहाँ पे ऐसी बात हुई थी कि if things cannot be proved empirically, if things are not proved on the basis of reason and empiricism, कि proof नहीं लाओ
तो कुछ नहीं है, राइट? सो अगर ऐसे इफ यू आर्ग्यू देन देयर इज नो प्रूफ ऑफ गॉड, बट देन पीपल विल डिवाइज ऐसे स्टेटमेंट्स रेटोरिक यूज करके, यू नो, वो बोलते हैं ना वर्ड प्ले, भाषा को यूज करके, कि टू मेक यू बिलीव बाय बाय आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, कि भाई ये है वो है, एंड यू नो एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, अगर तुम्हारी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी इट मैचेस देन थिंग्स हैपन, एज इफ वहां पे कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ हो रहा इज एंटायरली रिलेटेड, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी. इट माइट बी रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दैट डज नॉट मीन कि अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा में क्या होता है, अगर मैं एक डेटा दिखाऊं कि जब जब इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ा तब तब इंडिया में क्या बोलते हैं टेररिस्ट अटैक ज्यादा हुए. तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं. कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, राइट? If things can correlate, that does not mean that they are connected, right? So the thing is that there are people who deny the existence of God, mostly philosophers, on the basis of reason and rationality. Logical positivist हो गए, या फिर ऐसे philosophers हो गए जो who are atheist, who would say that कि भाई scientific proof नहीं है. And there are philosophers who would say that it is imminent, whether you believe in God or not. And then there is this whole socio-cultural analysis कि भाई what is the concept of God, कि पहले एक तो तुम linguistically define करो कि what do you mean by God. Then second thing is कि how is it historically contingent, कि भाई तुम्हारे भगवान तुम्हारे जैसे क्यों दिखते हैं, right? If he's a god of the universe, then why do they look like you, right? Why can't you imagine एक चीज है human brain की, we can never imagine a new color, right? We can never imagine a new color. So it is like people have to understand that faith and belief is a thing that is historically contingent, कि भाई वो हिस्ट्री और कल्चर से क्या बोलते हैं उन दोनों को तुम आइसोलेशन में नहीं रख सकते कि भाई भगवान कुछ अलग है और दुनिया में जो चीजें होती है वो अलग है, राइट? देयर आर पीपल हु आर आइडियलिस्ट कि पहले आइडिया आता है, थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ आवर माइंड एंड कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये बुक पड़ी है, राइट? इसको पूरी दुनिया ऐसा बोले कि इसका नाम पेन है, तो मैं कल से इस चीज को पेन बुलाऊंगा for communication, right? We are social beings, right? We are social animals, ये हमें communicate करना पड़ेगा, right? And कल से मैं जिस चीज से लिखता हूँ, कलम पेन, उसको तुम लोग बुक बनाने लगे तो मैं लोग हाँ मेरे को बुक पे लिखना है मेरे को, right? So it's like it's वो and people who are idealists कि human mind से you know everything is there. If there is no human mind, then दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो इट्स लाइक माइंड ओवर मैटर. एंड देयर आर पीपल हु आर मटेरियलिस्ट कि मटेरियलिस्ट मतलब नॉट द जो मटेरियल होल्ड करते हैं. मटेरियलिस्ट मींस कि पीपल हु बिलीव दैट थिंग्स दैट देयर आर इन द वर्ल्ड दैट अफेक्ट अस एंड देन वी रिएक्ट टू इट. फॉर एग्जांपल मेरे सामने कुछ पड़ा है, अब हम तीनों हैं, हमने ऐसी कुछ चीज देखी जिसका मीनिंग हमको नहीं पता है या फिर ऐसा उसका नाम ही नहीं है हमारे पास, then we would give it some name if we are you know if it's possible to. For example कुछ साल पहले अगर तुमने किसी को बोला था कि सेल्फी, right? मैं खुद की फोटो ऐसे लूं and then people would tell that it's a good picture or it's a good photo, right? But now what we say is it's a good selfie. So it's all historically there, right? So अगर मेरे सामने ये चीज पड़ी है और तुम्हारे सामने और ये पल्लव के सामने भी वही चीज पड़ी है, and we say कि हाँ okay well let's give it a name ABCD, right? Then we would have a concept, we develop a concept, right? We discover something and then
we have a shared understanding of it, and वो अगर जनरेशन में पास ऑन होगा, then there it is that it's mostly कि भाई इससे हमने कुछ बनाया, तो और इससे चीजें अफेक्ट होती है कि मेरे को अगर कुछ करना है, वो एक्सटर्नल फैक्टर वाला, कि मेरे को कुछ करना है, या फिर जो भी चीजें द वर्ल्ड गोज थ्रू हैपेंस थ्रू मटेरियलिज्म, कि भाई मटेरियल से मटेरियल रियलिटी, मतलब हमारे बाहर जो रियलिटी है उससे ह्यूमन माइंड अफेक्ट होता है एंड फिर हम चीजें करते हैं. So those people would say कि भाई God is also external but he makes us do things, or God is within us. It's a very diverse concept. कि अगर philosophers हैं, उनको क्या problem है, then you have to define which philosophers have the problem. Some philosophers don't. Then there are theologians who understand कि religions क्या होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि religion और sacred text है, right? अब people would say कि, for example, let's say भागवत गीता, अगर रिलीजन ऐसी चीज है जो ह्यूमन से बहुत ऊपर है, तो भागवत गीता संस्कृत में क्यों लिखी गई? पीपल से कि हाँ भाई ये तो लिखी गई ह्यूमंस के द्वारा, इट वाज स्पोकन बाय गॉड. तुमको समझ कैसे आई? वो संत महात्माओं को समझ कैसे आई वो कि व्हाट इफ द गॉड स्पोक व्हाटएवर, हाउ कुड दे पीपल वुड क्लेम दैट भाई वो तो उस जमाने के थे भाई, उनको तो वो मानते इसलिए. So that's a very logical fallacy. वो तो logical fallacy हो गई फिर. Just because you cannot explain things, you are commenting it. Yeah. So people would be just having logical fallacies कि वो हुआ. So everything is historically there. कि भाई there are traces in history. कि भाई चीजें ऐसी थी तो क्यों थी? If things happened, and this is a concept found in Michel Foucault, उसकी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में, राइट, कि एक चीज हुई, एंड इट्स आल्सो कंसेप्ट बाय फ्रीडरिक नीचे, जिसने अपनी जीनियोलॉजी कि गुड एंड बैड, आई मीन गुड एंड इविल को उसने ट्रेस किया कि भाई पहले किसको गुड मानते थे. सो इट्स लाइक पहले संस्कृत में लिखा गया, फिर अभी तो जो भाषा चाहिए उसमें आता है. क्यों? फॉर रिलीजियस पर्पसेस और फॉर money making purposes, right? There is a teleology in everything. There is an end, there is a purpose to everything. कि भाई ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है? तो पहले religion था, and religion people would thereafter there are even people who say कि religion और God अलग अलग चीज है. Religion समझ नहीं पाया God को, right? Then if religion नहीं समझ पाया तो तुम कैसे समझ रहे हो? आई एम नॉट सेइंग कि रिलीजन इंसानों से बहुत ऊपर है, बट इट्स लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू क्लेम. वहां पे फिर लिंग्विस्टिक वो आ जाएगा कि तुम हाउ डू यू डिफाइन गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय गॉड, एंड डज इट सूट एवरीबॉडी, एंड व्हाई डू यू वांट. यहाँ पे आता है एक कंसेप्ट, विल टू पावर. एवरीथिंग वांट्स टू ग्रो, एंड पावर नॉट एज इन कि मैं तुमको बोलूं कि ये चीज कर दो. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ पावर ओवर यू, जो नॉर्मल सेंस में पावर होता है कि मैं तुमको बोलूं कि तुम दोनों को चलो मेरे लिए ये करना है, एंड यू हैव नो ऑप्शन टू डू, तो मैं तुम पे पावर एक्सर्ट कर रहा हूँ, राइट? बट दिस पावर इज मोर लाइक अ फोर्स कि अगर मेरे को और तुमको कुछ करना है, देयर इज एवरीथिंग, इट्स इन प्लांट्स, इट्स इन एवरीथिंग, इट्स अ मेटाफिजिकल कंसेप्ट गिवन बाय फ्रीडरिक नीचे कि हर चीज it wants to exert power over the other. It's not like कि मैं करवा रहा हूँ, it exists. There is a concept of hegemony by Antonio Gramsci, right? कि अब in general terms hegemony means किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे पावर या डोमिनेंस. But here what he means by hegemony is mind control, or something what I would say is कि मैं जैसे कि आज हम कुछ बात कर रहे हैं, अब इस पॉडकास्ट में if Pallav says something, if Janish says something, if Stavan says something, we three are influenced by each other's ideas, right? And tomorrow our actions are molded by it. कि for example मेरे को ऐसी कुछ चीज तुम दोनों में से सुनने को मिली कि मैं कल मेरे एक्शंस बदल दूं,
ये होता था पैनॉप्टिकन करके एक जेल ऐसी बनाई गई थी जिसमें कैदी थे ना, वो आजू बाजू रहते थे एंड बीच से उनकी निगरानी की जाती। दे वर सर्वेड फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी मॉल्स होते हैं, सॉरी सीसीटीवी कैमरास होते हैं इन मॉल्स। तुमको पता है कि वहां पे कोई मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू डू नॉट डू समथिंग दैट इज लीगली, यू नो, इट्स लीगली अनएथिकल। ऐसी कोई चीज नहीं करोगे। यू वोंट डू समथिंग इलीगल जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट देयर इज समवन हु माइट बी सीइंग यू फ्रॉम द कैमरा, कोई सिक्योरिटी वाला, राइट? दैट्स अ फॉर्म ऑफ सर्वेलेंस। तो उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट यू आर चेंजिंग योर होल course of action just because of that. So that's like a power over your mind, right? It's mind control. It's a control that's above the structures and above जो normal power होता है। तो ये चीज अगर हम religion पे अप्लाई करें या फिर God पे अप्लाई करें, तो your concept of God might be merely a will to power की, for example God और morals की बात करें तो people would say कि हाँ भाई भगवान देख, सब देख रहे हैं, अगर आज तू कुछ खराब करेगा तो ऊपर जाके तेरे को जवाब देने के, राइट? दैट वुड बी अ मोरल कॉज। बट यू नो ये एक बहुत एक जोक है, आई होप पीपल टेक इट लाइटली, कि समवन सेड कि बीइंग फ्रॉम द गे कम्युनिटी इज अ सिन एंड गॉड विल सी यू इन हेल। तो किसी ने बोल दिया कि पर भगवान हेल में कर क्या रहे हैं? should be in heaven. That's just a joke, but it's like what do you mean by God is something यहाँ पे ना। So if we check the whole conversation, it's not about philosophers being against God or scientists being against God or scientists being with God. It's more about कि तुम what do you mean by God, and moreover what is the purpose of having the concept of God. Yes. So then like according to you, you said that someone is watching you is something like we have in our mind that, oh, God is watching us. We do this. That's why we develop morals, right? That there's few morals, there are good things that you to do. So the God is watching you. There are bad things that you need to do, but no one has defined that. That what is good, what is bad, and also Yes, that's a very interesting thing. yes, and also that's what morals are. That this is a moral value. Don't drink, don't smoke. Morally, it is not correct, right? That could be ethical, Like to be very honest. yeah, like something like like morals and ethics, right? That thing. So if we remove that, then if we remove, then there is no God kind of a concept, right? Then I think that morals would not exist, because we feel that there is no one watching, there is no sin, there is no good deed, nothing like that. So there are no morals. Then do whatever you want, right? So Yeah. that was in cave age where people used to kill each other just to survive. You know, when people started, people say that that concept of God started, and the concept of moral started. That what is right, what is wrong, what we need to do, how we need to behave as a human, right? That's how we evolved. So this can be said that moral values of humans, if would not exist or would go away if the concept of God does not exist in our mind. How true is that? How true is that? I would add one thing here with Yes. what Pallav said. Mm-hmm. Morals are determined by the society, right? Morals are determined by the way we live with people. Our morals may get affected or may get be designed due to the concept of society, right? If people say that it is quite understood that we should not kill each other, right? So because it is considered to be illegal, you'll be getting a term in the jail, right? You'll be getting served in the jail. So you morally don't pursue something that can get you in trouble. But at the same time, Pallav mentioned two things, right? Which are considered to be ethical for a single person. It is completely dependent on the individual.
whether it is considered, if let's say, if I'm say feeling that, if I'm saying that I don't drink or I don't smoke because I don't feel like so, or I should not. If I say I should not, then that's a question of my ethics, my personal ethics. I cannot say that all of you should not do this because I'm not doing it. So how do you differentiate morals from ethics, and how does how does ethical conundrums are different, are defined individually, but morals are defined by the society? How does that work? Well, to be honest, in the classical definition, it is the reverse of this. Like ethics comes from a group. For example, there are business ethics that you have to do these particular things in business. That जैसे लोग बोलते हैं कि दोस्ती एक तरफ, business एक तरफ, right? And then there are ethics in business. You have to do you have to act in a particular way with the customer, right? Then there are religious ethics. कि भाई एक temple में how do you have to behave? When you go to a church or a mosque or a gurudwara, how do you have to behave, right? So ethics can be defined by a group, and morals can be influenced by the entire society. It might transcend the boundaries, right? And they become very personal and subjective if you see on an individual scale. That, for example, first of all, we have to understand why killing people is bad. Because there is one quote, I would paraphrase, I'm not exactly quoting it, and I don't remember who said it. I guess it was Voltaire de Cleyre. I don't remember. But I'm just paraphrasing it. I'm not saying the exact words. It was said that when one person kills another, that's immoral, right? But when thousands of people do it, it's called a government. So, so what about that? How is morality defined? It's always defined within power. And to understand morality, in my personal recommendation, I would recommend one book by German philosopher and philologist Friedrich Nietzsche, The Genealogy of Morals, where he dig into how morality in the West came up, right? So first, ऐसा था, and then there is this book which I have right now, which I showed as an example, Beyond Good and Evil, right? So it's very interesting that he shows that there are things like, like people say, खुद पे ज़्यादा गुरूर मत करो, don't have too much pride in yourself, or you might become egoist, right? It would inflate and you would become an egotistical person, considering yourself above everybody, which would harm others, right? So pride and drinking or smoking, how are these defined? For example, drinking and smoking, लोग आजकल क्या, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कि मैं बोलूं कि भाई आई एम योर फ्रेंड और आई एम योर फादर और मदर और सिस्टर, एंड यू डोंट हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू ड्रिंक और स्मोक बिकॉज आई एम सेइंग सो. तो वहां पे देयर वाज अ फोर्स्ड मोरालिटी. एंड देन आज क्या होता है, पीपल से दैट कि भाई मेरे को स्मोक नहीं करना है, तुम लोग को करना है तो करो, मैं नहीं करूंगा, राइट? दैट्स व्हाट पीपल से. बट देन why, what are the moral subtitles within that? वहां क्या है कि people cite science and कि भाई ये तुम्हारे हेल्थ के लिए खराब है, तुम आगे जाके मर सकते हो, right? Then I would ask क्यों? तो it's my personal life if I die, right? So, but there comes the thing about community, and then we would have to go into the history of family, कि भाई family आया तो मैं family, because community means the basic unit is family, right? Even if it's not a family, then the bigger one is community. And then there comes in our postmodern era a particular category that we are categorized in, maybe a nation or a particular district or something or city, right? ऐसे identities होती है. So
it comes, it's very much historical and it's manifold कि बहुत सारी बहुत सारे points है, बहुत सारे dots है that you have to connect. So first of all, एक basic question अगर answer करूँ कि if there is no God, मैंने like Pallav had pointed कि अगर God नहीं होते, if we like चलो मान लिया नहीं होते, but हम उस आइडिया को कैसे जाने दे कि गॉड है, उसको जाने कैसे दे? इफ वी लेट इट गो देन पीपल वुड बी immoral and people would start killing. यहाँ पे दो चीजें आती हैं. So do you need a god to behave yourself? Right. Why do you need it? And secondly, how is killing wrong? I am not promoting killing right now, right? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाके मार दो, but we need to ask these questions. Yeah, we are providing this statutory warning. Please do not kill anyone. Even though someone recommends. Right, but yeah, so and then because people and it's like we would have to answer that, are we more civilized or are we disciplined? Michel Foucault ने क्या बोला था? He said that the people who were considered mad in the 15th and 16th centuries in Europe were more free than the people who are mad in the 19th and 20th centuries. कि उन लोगों को कैसे ट्रीटमेंट देते थे कि हाँ भाई ये तो भगवान की देन है, ये सब थोड़ा पागल हो गया है, बट इसको सोसाइटी में रखो. बट आज if we see that someone has a mental illness, जाओ थेरेपिस्ट के पास. or if we see that someone has a heavy disorder or something, भाई इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में. there are mental hospitals, there are wards about that. people are disciplined. क्यों? because there is an establishment कि लोग ऐसे ही होने चाहिए, कि भाई वो बॉडी का वो इंडेक्स होता है ना, कि इतना वो स्केल होना चाहिए, कि इतना ही वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना परफेक्शन होना चाहिए, इतना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए. सो व्हाट इज दैट? इट्स लाइक एक नॉर्म बिल्डअप किया है एंड पीपल वुड थिंक कि उसमें बुराई क्या है. नाउ लेट मी से हाउ दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इज एसेंशियली रॉन्ग, कि thinking about your health is not wrong, but being disciplined can be fatally bad for you. For example, पहले क्या मानते थे? लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर मर्द को घर के काम नहीं करने चाहिए. That was a thought of the past. या फिर रिलीजियस चीजें सिर्फ पादरी और जो पुजारी होते हैं वही पढ़ सकते हैं, नॉर्मल लोग का कोई हैसियत नहीं है सब पढ़ने का. तो पहले ऐसे बिलीफ्स थे, राइट, बट अब नहीं है. एंड अगर आज के जमाने में तुम ऐसा बोलो कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए तो तुम पागल हो, राइट? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट? इफ यू बिलीव थिंग्स लाइक दैट देन यू वुड बी कंसिडर्ड इमोरल, जो पहले बहुत नॉर्मल चीज होती थी. So Michel Foucault says that we have to also apply that to everything. People are disciplined. For example, mental hospital, right? So in a way, are we civilized right now or have we been disciplined? Because ऐसी चीजें होती गई, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते गए, गवर्नमेंट हो गया, नेशन स्टेट्स हो गए, नेशनल प्राइड हो गई, एकेडेमिया, स्कूल्स हो गई. स्कूल में लिटरली, इफ आई गिव अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्कूल में हमको पानी पीने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. इमेजिन. इज इट लाइक आजकल कितने लोग बोलते कि डिहाइड्रेट मत हो जाना, डिहाइड्रेशन कॉजेस दिस एंड दैट. वी लिटरली हैड टू आस्क फॉर परमिशन. व्हाई? नॉट बिकॉज कि हमें पता नहीं हमको पानी पीना होगा या नहीं. इट्स बिकॉज दैट you show respect towards authority in every sense of life. You are treated as not as slaves, but you are shown that कि showing authority, कि किसी और को ऐसे इज्जत देना बहुत बड़ी बात है. इस तरह की इज्जत बहुत बड़ी बात है, तो तुम भी अच्छे हो. So we are not said कि directly नहीं बोलते कि तुम गुलाम हो, हम कैसा बोलते कि तुम गुलाम हो और तुम बहुत अच्छे हो. Being a slave of obedient. somebody. हमें ऐसा बोला जाता है कि आप obedient. slave नहीं बोलते, obedient बोलते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे. We feel good about ourselves. Yes, exactly. And
लोग बोलते हैं कि हर चीज लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होनी चाहिए, एज इफ लॉ एंड ऑर्डर कभी बदलता ही नहीं। पहले लॉ क्या था? ब्रिटिश लॉ था ना, राइट? एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हुए? इट्स नॉट इवन द नो लाइक इट्स नॉट दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में जो था वही का वही। ट्रू सॉरी 51 में। Yeah. और after every amendment there is some change, right? So people who say that कि law and order के हिसाब से होना चाहिए, what do you mean by law and order? What is legal and what is illegal? Who decides that? Well, this all comes under political philosophy. right? इसके बारे में शिवांग और यश बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे मेरे से भी। right? We'll definitely have this conversation with Shivang. yes. So morality. So coming back to the main question, ये मैंने चीज इसलिए समझाई कि morality comes not from हम ये नीचे ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि पहले के जमाने में when even before the rise of Christianity कैसा होता था कि for example I am a slave and you both are rulers, right? तो मैं तुम्हारे लिए काम करता था एंड उस जमाने में क्या था कि ऐसा मानते थे कि the people who are rulers, people who are noble are powerful and good and people who are slaves are bad, right? उसके बाद Christianity आई which reversed this thing कि they have exercised power upon you intentionally, unintentionally. I'm not blaming Christianity or I'm not praising Christianity. मैं दोनों में से एक भी चीज नहीं कर रहा हूँ. I'm just saying what Nietzsche has said कि what Christianity did is उल्टा कर दिया इस इक्वेशन को कि those people are oppressing you and you are their slaves, right? So you are good, you have not done anything wrong to become a slave, but they are bad. So एक डायकोटोमी खड़ी हो गई कि अगर वो भी evil है हम भी bad है, then what is this? So he shows that it's historical, right? So ages and ages after there are things that comes and इस हर चीज में the basic thing is power, the will to dominate for survival. अब यहाँ पे वो will to power वाला concept आता है कि you want to survive, right? First you dominate. Why? Because you want to survive. And this is the will to power कि you want to grow. तुमको जो है you are constantly changing, right? You are not the same biologically and in every aspect you are changing. So उसने बताया कि ऐसा कोई good and evil fixed नहीं होता है कि यही चीजें सोसाइटी में गुड है यही चीजें सोसाइटी में evil है. It's just that society defines it. And कैसे डिफाइन करती है? मैं और तुम करते हैं नहीं. It's who we give power to, right? If you speak against a particular culture in our country, तो तुमको जेल में डाल देंगे. But if you speak against a particular country, that's our neighbor, तो तुम्हारी बड़ी वाह वाह होगी. But बाजू के ही देश में जाके तुम उनकी वाह वाह करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, right? So it's not कि ये हर जगह लिखा हुआ है. It's based on power कि कौन डिसाइड करता है क्या अच्छा और क्या बुरा है. And Michel Foucault का एक कोट है where there is power there is resistance. Yeah. फ्रिक्शन से ही चीजें आगे बढ़ेगी. There are like तुम्हें चीजें मिली it's they are not they are not come just because you are good or you are bad. थोड़ी देर पहले we talked about कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है बुरे लोगों के साथ बुरा होता है. So how do you define a situation as good and bad and how do you define a person as good and bad? Although definition की भी एक बहुत interesting चीज है. एक कोट है कि all those things that do not have a history can be defined. मतलब हर चीज की हिस्ट्री तो होती है, right? Everything has a history. So there is nothing in the world that can be defined कि हाँ भाई इतना ही है, right? It's just for our own understanding. Because everything is ever changing and evolving, right? Everything related to life. Exactly. Life itself evolves, whether humans are there or not.
And it's like ship of Theseus वाला एक example. Yes. Yeah, right. Right. You know कि एक शिप के मैं सारे के सारे पार्ट्स उखाड़ दूं और उनको रिप्लेस कर दूं, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल ये मैं बुक है, इस बुक के मैं फ्रंट पेज, बैक, ये बैक कवर, अंदर के सारे पेज उखाड़ दूं और कहीं और रख दूं, और एक साथ नहीं उखाड़ता हूँ, पहले ये मैं कवर उखाड़ता हूँ और ऐसा ही एक दूसरा कवर नया वाला लगाता हूँ इस पे, एंड आई डू द सेम थिंग विद दिस, एंड वन बाय वन आई डू इट विद ईच ऑफ दीज पेजेस, राइट? तो वो मैं इस बुक को मैं अभी ये जो बुक है ना मेरे सामने, इसको बोलता हूँ बुक ए, बराबर? अब बुक ए का पहले मैंने ये कवर निकाला और नया डाला, ये कवर निकाला और नया डाला, बीच के सारे डाले, तो मैं बोलूँगी हाँ ये ले तेरी बुक है, बट मेरे पास ये बुक ए के सारे पुरानी चीजें भी पड़ी, राइट? पुराना कवर, पुराना बैक कवर, तो मैं उन सबको जोड़ दूं तो वो भी बुक ए नहीं बन जाएगा? True. सो यहाँ पे आता है वो डेल्यूजे का सबसे पहले पॉडकास्ट में मैंने बोला था ना कि डिफरेंस एंड रिपीटेशन की पोटेंशियलिटीज होती है। मैं सेम बुक होगी मेरे पास और तुम्हारे पास और पल्लव के पास, राइट? बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट द सेम, बिकॉज पल्लव के पास जो बुक होगी वो एक डिफरेंट स्पेस और टाइम में। हाँ, सो एज पर शिप ऑफ थीसियस we could see that what do we call as identity? Do we call the biological aspect or the material aspect of humans as, you know, a particular thing, right? Or do we understand it beyond the idea of ship of Theseus, that is by the Deleuzian idea? उसमें क्या है कि वो शिप ऑफ थीसियस को एक अलग तरह से, I mean, he does not talk about ship of Theseus, but उसको apply कर सकते हैं यहाँ पे कि, for example, I have an exact thing. Like, for example, this book might have hundreds and, you know, thousands of copies, right? And you also possess it. Pallav also possesses it. I also have it, right? So, but the potentiality in this कि मैं इसको पढ़ूं और मैं कुछ और समझूं, you understand something else, Pallav understand something else, and Pallav का location, your location, my location, everybody's location is different. So ये book खुद एक अलग time और space में exist करेगी for the most fundamental difference, right? So even if they are repeated, things are connected by differences. Differences से identity बनती है. तुम, how do you know that you are yourself? हाँ, because I am different from others. हाँ, yes, true. Right. That I am not this table. I am not you. That's why I am me. You cannot be a thing by yourself. There has to be a reference point, right? Yes. And the only thing by itself is this entirety of phenomena. You know, universe उसको बोलो या फिर, that is the only thing that is by itself. And it's not as if कि वो भी ऐसे ही, you know, it can identify itself by itself. We are using it. Needs, yeah, we are also needs nothingness to identify itself. Yes. Right. There has to be a reference of nothingness in order to, you know, define absolute something. Yeah. True. Yes. True. And that same thing goes with humans, right? I mean, I always feel that universe itself or life itself is objective by itself, right? It's there, it exists. But the moment human existence penetrates life, it becomes subjective. And everything that is there in reality is subjective, because we are here, we are existing. And so nothing can be, taken without a pinch of salt. Everything has to be taken that way, because nothing can be considered to be absolute. Everything has a certain reference point, and that reference point also changes according to the space, and as you rightly mentioned, according to space and time.
even for a single person, even for yourself, even if you are reading this book in 2021 with whatever experience you have of life, with whatever thought process that you have, that you possess till now, and based on that you are reading that book in 2021, it might affect you differently when you read that same book in next 20 Yes. years, right? After 20 years. Yes, exactly. And Yeah. this is what Heraclitus, a Greek philosopher, said that you don't step in the same river twice, right? And it's like, even I can say it's like, more than ये जो चीज है ना, ये कांत ने बोली, इमैनुअल कांट, अ फिलोसोफर ऑफ एनलाइटनमेंट, उसने क्या बोला था कि नाउमेना और फिनोमिना, दो चीजों में उसने डिफरेंस दिया था। कि एक होता है नाउमेना, जो लाइक फॉर एग्जांपल समथिंग, देयर इज अ टेबल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? सो वो टेबल मेरे दिमाग में ना एक अप्रायोरी नॉलेज है, कि ऐसा नहीं कि जो मेरे को बाहर और एक्सपीरियंस से मिला, नहीं, ऐसा नहीं, ही उसने ऐसा बोल दिया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू और नॉट, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट दैट फिलोसोफर डिस्क्राइब, कि वी हैव इन आवर ओन ब्रेन्स अ प्रायोरी नॉलेज, पहले से ऐसा नॉलेज फिट है ऐसा, एंड आवर सेंसेस लाइक आईज एंड ईयर्स, और लेट्स से आवर टच, that makes us understand the world and perceive the world, at least कि हम देख सकते हैं, and that our sense perception and our prior knowledge both mix and create phenomena, कि मैं इसको टेबल बोलता हूँ बट ये टेबल सच में कुछ और भी हो सकता है, like what I see, like for example I see a color, I see its properties, ये वो, right? So noumena is a thing by itself, कि ये सच में जो चीज है वो, उसको मैं ओरिजिनल नहीं देख रहा हूं, मैं ह्यूमन लिमिट से देख रहा हूं. That's what Kant said. But then Hegel and other philosophers, they came and said, like mostly Hegel said that how can there be a noumena? Everything is becoming. उसने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस दिया था कि सेल्फ मूवमेंट is purpose, is negation, is the absolute thing in itself. मतलब कि for you to change, अगर तुम दोनों का चेंज होना हो, then you have to negate something, right? कि आज जो मैं हूं उसको मेरे को नकारना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ और बन सकता हूँ. I cannot say कि at this very moment कि अक्टूबर 2020 में जो स्तवन था वही स्तवन अक्टूबर 2021 में अभी है. I have to negate that person to be this. And what is purpose? Purpose is like, for example, you want to quench your thirst. तुम उसके लिए पानी पीते हो. So what is purpose here? कि हमको अपनी प्यास बुझानी है, right? And how is that purpose coming? How does that purpose come into existence? By your thirst being quenched. तुम्हारी प्यास बुझ जाती है, तुमने पानी पी लिया. So purpose is self movement. कि कि पहले पर्पस क्या था, एक पोटेंशियल में था कि उसकी प्यास बुझानी है और प्यास बुझ गई. So purpose becomes from our minds to reality. It comes from our minds to reality, right? So, and how does it come? By negating it. वही बोला ना मैंने कि how do you recognize oneself? By negating कि I am not the other. So that is the thing. So इन लोगों ने ये बोला, and as you said, you believe कि there are things in reality, and हम humans penetrate it, and things occur the way they are, right? So that's like, it's like we have a frame, we have lens. For example, मेरे को कुछ चीज को एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देखना हो तो वो हो सकता है, बट इसमें फिर से मैंने, as we have already discussed, कि इसमें everything is within power. जो नरेटिव, जो
लैंग्वेज, जो कल्चर, जो थॉट, विच एवर थिंग्स डोमिनेट यू, एंड इसमें हमको चीजों को we don't have to treat the universe like a machine. It's not like it functions for us. लोग बोलते हैं ना कि yeah, you know, universe is controlling everything. Things will fall into place. How do you know that they are going to fall into place? ऐसा कुछ लिखा गया है क्या? Or how can you even define that things are going to fall into place? Can you define what things falling into place means, right? For me and for you. And moreover, universe is not a machine. It is, ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसी बनाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं लिटरेचर पढ़ने के लिए बना रहा. मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, मैंने कुछ डिसीजंस लिए, मेरे साथ वालों ने मेरे को एनकरेज किया, या फिर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग लगा इसमें, राइट? बहुत सारे फैक्टर्स थे, राइट? So it's not as if I was made for it. So it's just like that. Universe is not made for something. It has innumerable, potentialities. कि कुछ भी हो सकता है. It is just like that example कि correlation is not causation. ये अगर दो ग्राफ मैंने दिखाया है, राइट, वो वाला. So it's not that कि अगर एक चीज हो रही है and that things happen, that at the same time something is happening with you, so that those both things can be related. They are interconnected, but they are not directly related. ऐसा. Can we say that man is a creation of consequences? Yes, but there is a very interesting quote for that. Like, and you can think upon it, by Friedrich Nietzsche. He said that cause and effect are the same phenomenon, we just separate them. Okay. Everything is a continuity. Okay. For example, मैं like अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि सक्सेस, पहले तो ये डिफाइन करना है सक्सेस. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत स्टीरियोटिपिकली सक्सेस को देखूं. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज व्हाट आई बिलीव सक्सेस इज, बट चलो मान लेते हैं कि करोड़ों रुपए कमाना इज सक्सेस, बराबर, मान लिया. देन चलो मान लिया कि मैं कल से कौन बनेगा करोड़पति में चला गया, एंड आई विन 1 crore rupees, राइट? तो वहां पे अब वहां इफेक्ट आया कि आई वांट समथिंग, एंड उसका मैं कॉज क्या बोलूंगी? भाई मैंने पढ़ा था, मैंने बहुत मेहनत की थी, और लकीली ऐसे क्वेश्चंस भी आए जो मेरे को आते थे, और मैं करोड़ रुपए जीत गया. तो एक कॉज हुआ, इफेक्ट हुआ. बट व्हाई आर दे सेपरेटेड? कि 7 करोड़ रुपए जीतना और उसके पहले की सारी चीजें दोनों अलग अलग कैसे हुई? बिकॉज 7 करोड़ रुपए जीतना is something seen in the society as something very huge. Right? Yeah. If it is considered, उसका कोई मूल्य नहीं होता. Even if दुनिया में एक ही बंदे के पास 7 करोड़ है, बट करोड़ों रुपए का कुछ वैल्यू ही नहीं है, then people would not consider that as something. So as I was saying कि cause and effect है तो एक ही चीज. It's just that what cause is and what effect is defined by us. It's categorized by us. ऐसे कैटेगरीज होती नहीं है. इसके लिए एक shared वैल्यू चाहिए कि भाई you, me and Pallav agree on something, and that can be a shared knowledge. इसमें linguistic factors, episteme, like philosophy, basically उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है. एक होती है metaphysical, like it talks about reality, what things are, how things are. Then there is epistemological, जिसमें it talks about what do we know, and like how do we know, the mode of attaining knowledge, right? ऐसी अलग अलग चीजें होती है. So there are many factors that determine under philosophy ki what are we talking about. There is phenomenology, and there are many movements, structuralism, post-structuralism, modernism, postmodernism, India में Vedic philosophy and post-Vedic philosophy, and then the modern Indian philosophy. So yeah, it's like if we talk about the cause and effect,
So yeah, it's like, you know, what you were talking about कि कुछ होता है, and so there are some few points, key points कि एक तो universe is not a machine, and there is not like, you know, it's not to be treated as something that is you know, it's functioning like that, and then answering many questions through the cause and effect thing. एक तो फ्री विल और डिटरमिनिज्म या फिर कंपैटिबिलिज्म, तीनों में से ऐसी कुछ चीज होती नहीं है. इट्स अपॉन पर्टिकुलर बिलीव्स, एंड देन वी वेंट ऑन टू टॉक अबाउट मोरालिटी कि भाई गुड और बैड पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, एंड हाउ इट इज डिफाइंड, इट्स डिफाइंड बाय पावर. या राइट, पावर, एंड पावर नॉट एज इन कि मैं तुमसे कुछ करवाऊं, पावर एज इन जो माइंड कंट्रोल, एंड आई टॉक्ड अबाउट द 3 layers of that. So yeah. Yeah, you rightly summarized the whole episode. वही बोल रहा था, कंक्लूजन बोल रहा था, बोल दिया है. You given the crux of our episode. Yeah, so I think ये अभी और बातें चलती रहेगी. ये तो हमारी जब हम ये ऐसा ही टॉपिक है कि इसके ऊपर घंटों बातें हो सकती है. पर हमें हजारों साल कर सकते हो. हाँ, वही मतलब बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है इसके ऊपर, तो लोग लिखते, अभी भी लिख रहे हैं. तो अभी इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इस पॉडकास्ट को. सो थैंक यू Stavan and for joining this podcast, and please do follow Stavan on Instagram, and do follow also RiffScript and Jainish Soni. Thank you so much for this opportunity. या जैनिश बहुत मेहनत कर रहा है अभी यहाँ पे. एंड आई नहीं मतलब सिर्फ मैं नहीं, पॉडकास्ट के लिए पल्लव, हर्षवर्धन, कृणाल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जो एडिटर होते हैं ना, एडिटर दिखते नहीं, लेकिन जो को होस्ट है हमारे, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अभी ये यूएसए से है. तो मतलब हमेशा इन लोगों की मेहनत ज्यादा रहती है कि अपना टाइम निकाल के, अपने काम से टाइम निकाल के हमारे लिए पॉडकास्ट करने आते हैं. और स्पेशली जो गेस्ट पॉडकास्ट एक इफेक्ट है, उसके कॉज तुम लोग हो. और अगर Stavan जैसे गेस्ट हो कि ऐसा लगे कि हम और बातें करते ही जाए और टॉपिक्स निकालते ही जाए, तो ज्यादा मजा आता है. तो थैंक यू Stavan. तुम्हारी टीम, especially I thank your team for giving me this opportunity, and I especially Shivang को भी एक, you know, an indirect thanks for recommending me to him. Yeah, definitely. मतलब शिवांग को तो हम I would also thank him, because हम जब भी मिलते हैं बहुत सारी चीजों पर बात होती है, तो उसने बहुत बार बोला है कि Stavan के साथ एक बार बात करो, मजा आएगा. तो मैंने सोचा हम डायरेक्टली बात क्यों करें, हम पॉडकास्ट से ही बात करेंगे. नहीं, that's a good idea. वही. So to all those watching this or listening to this podcast, do share this episode as much as possible, because we have been, you know, creating some amazing podcasts here, and we have talked about a lot of things in this particular episode, and it's quite fascinating for all of us who are recording this at this point of time. So please do like, share, and subscribe to our YouTube channel, and do follow us on various social media platforms. Do follow Stavan and Pallav as well, and stay safe, stay home, and thank you all for watching or listening to this podcast. Good night, good morning, like, share, subscribe. Good afternoon. Yeah. Like, share, and subscribe. Good night, Shabba Khair. Okay. Chalo, thank you. Okay, Bye bye. Chalo, thank you. Bye.